Hello. Yes. We'll start in 2 minutes.
Hello? 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 Can you hear me? Hello? Hello? Can you hear? Hello? Hello? Can you hear? Yeah. One student asked why only thermodynamics. So I scheduled this class on YouTube 4 days back. I was I was the first one to schedule on YouTube, but I don't know what happened. To be honest, I have no idea. So मैं पहले schedule किया था. So as you asked the question, I am answering. So I scheduled with a plan long back, but I don't know what happened. तो ये मेरा जवाब है सर. If you want, you can check also. I scheduled first. It was thermodynamics. ठीक है? Yes, definitely I'll come up with different subjects. Definitely, because I teach around 15 subjects, so don't worry. So I'll be teaching maximum, so don't worry. Yes, Chandrayaan batch. You know, it is starting on, just I'll take 1 minute. This is starting on 4th June. Matlab from tomorrow. And all the educators will take classes on this. मतलब द सब्जेक्ट डिवीजन ये सब लाइक इंटरनली है. सो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको कुछ बेस्ट मिले, और वो भी कॉम्प्रहेंसिव मैनर में, नीटली इन ए नीट मैनर. ओके, सो द बैच इज स्टार्टिंग. क्या हुआ? लैग हो रहा है? लैग हो रहा है? ठीक है. ये किस नेटवर्क को कनेक्ट हुआ है एक बार देखता हूं. इज एवरीथिंग फाइन? अभी लैग नहीं हो रहा ना? अभी फाइन? अभी फाइन, वेरी गुड. अब स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को कनेक्ट किया, डोंट वरी. सो 2 मिनट इस बैच के बारे में बात करके हम अब अभी 1 सेकंड. लैग हुआ क्या? बीच में थोड़ा लैग हो रहा. अभी नहीं होगा सर, बिकॉज आई चेंज ना, एक बार होता है. अभी ठीक है? या, थैंक यू फॉर योर फेथ. तो बिल्कुल करवाएंगे जितना मैक्सिमम पॉसिबल है. थोड़ा लैग हो रहा है तो आई सी दैट. नाउ इज इट फाइन? अभी सब ठीक है सर? अभी सब ठीक है? फाइन, वेरी गुड. नाउ the main aim of these classes is like, you know, चंद्रयान बैच में सिस्टमैटिकली हम कवर करते हैं. चंद्रयान बैच में इसरो सिलेबस कॉम्प्रहेंसिवली इन 4 months, 3 to 4 months. बिकॉज मुझे तो लगता है कि एग्जामिनेशन विल बी समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर में, ऐसा मेरा अनुमान है. फ्रॉम माई सोर्सेस आई केम टू नो कि वो रहेगा, ऐसा लग रहा है. बट वी डोंट नो, बट विल सी दैट 3-4 months में जो भी है पॉसिबल नीटली वेर एवर कॉन्सेप्ट आर रिक्वायर्ड वो डिस्कस करते हुए हम सिलेबस करेंगे. ठीक है सर? इसमें डिटेल्ड वे में होगा. डिटेल इन द सेंस मतलब सारे सब्जेक्ट्स को लाइक वेर एवर कॉन्सेप्ट आर रिक्वायर्ड डिस्कस करते हुए हम बैच को कवर करेंगे. बट ऑन यूट्यूब इट डिपेंड्स, मतलब हमारा अवेलेबिलिटी, हम विल गिव आवर बेस्ट, बट यहां पे अवेलेबिलिटी पे डिपेंड होता है. वो तो कंफर्म लेना ही है वो. सो दैट वी हैव टू टेक, बट दिस डिपेंड्स ऑन आवर अवेलेबिलिटी. ओके, दैट्स व्हाट आई मेंट. ठीक है? ओके, राइट. तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. कल ही एक ही दिन है, तो टुमारो वी आर स्टार्टिंग द बैच 4th June. तो प्लीज सीक्वेंशियली मतलब जो सब्जेक्ट्स है वो कवर करते जाएंगे. ओके, राइट. नाउ व्हाट इज माय प्लान फॉर दिस यूट्यूब सेशंस. देखो, आई विल नॉट डू पीवाईक्यूज बिकॉज पीवाईक्यूज इज योर हेडेक. सर ये क्या बोल रहे हैं? पीवाईक्यूज मींस ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, पीपल विल गिव सॉल्यूशंस. वो तो होगा ही है सर, वो आप प्रैक्टिस कर लेना. दैट यू शुड प्रैक्टिस. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? सो आफ्टर सीइंग ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस इसरो के देखने के बाद मैं आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं. डिफरेंट इन द सेंस विच वी कैन एक्सपेक्ट.
एंड आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड यू व्हेन यू सी सम न्यू क्वेश्चंस, कुछ आइडियाज भी आ जाएंगे सर। दैट इज द मेन एम। व्हाट इज योर डाउट? व्हाट इज योर डाउट? व्हाट इज योर डाउट? आशुतोष, आशु कुमार, व्हाट इज योर डाउट? डाउट ही पुट नहीं करते, प्लीज क्लैरिफाई माई डाउट। क्या डाउट है रे? नहीं, क्या है बोलो, अभी स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। Currently attending classes day at an academy. I am currently doing studying for a job as technical assistant. So I don't know what kind of study I should do. Please tell me. Okay, okay. So for technical assistant, तो आप मुझे, मेरा नंबर तो है आपके पास, you message me. I'll give you one source so that you can contact. ठीक है, मैं एक सोर्स देता हूं, उनको कांटेक्ट कीजिए। इज इट फाइन? ठीक है सर जी। ओके, एक सेकंड, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको कांटेक्ट कनेक्ट तो नहीं कर सकते इसको इधर। ठीक है, कोई बात नहीं, चले। शैल वी सिट? ओके, राइट। प्लीज नोट डाउन दैट, पहले हम ऐसे करेंगे सर, एक सेकंड। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चंस करते जाएंगे, और बाद में, हाँ ठीक है, यस यस यस। चलो उल्टा आएंगे सर हम, आई थिंक उल्टा आएंगे। चलो, टेक दिस क्वेश्चन, उल्टा आएंगे। सो वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, आई विल डू इट सर। ओके, राइट। चलो, अगर आपको थीरी चाहिए, आई विल गिव यू। डू यू वांट थीरी? थोड़ा बहुत थीरी चाहिए? व्हाट डू यू वांट, यू टेल मी। आप बताइए, डू यू वांट अ बिट ऑफ थीरी? बट अभी पेपर नहीं आया सर, बीईएल का। बीईएल का पेपर नहीं आया सर, सो अभी हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। चलो, अभी तो ग्रुप फॉर्म नहीं किया, विल फॉर्म अ ग्रुप। देखो, अब बताओ सर, डू यू वांट थ्योरी और डायरेक्टली? डायरेक्टली थोड़ा बेसिक्स दे देंगे, ठीक है सर। बिटल वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, आई गिव यू। वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, आई गिव यू। विल इट बी ओके? वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, आई गिव यू। चलो, हाँ, टेक दिस। D dash Q and D dash W are the heat and work interactions of the system. One more thing I am telling you. In some questions, what I have done is I have linked some concepts so that 3-4 questions can be framed that. मतलब उससे एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है। डोंट थिंक दैट लेंथी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस लगाए सर, सिंपल इन द सेंस नए क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। देखो, D dash Q and D dash W are the heat and work interactions of the system with its surroundings, and du is the change in internal energy. For an adiabatic process in a closed system, constant pressure combustor, मतलब process is constant pressure and closed system adiabatic, constant pressure combustor, ठीक है। Which of the following is correct? Whenever it is a closed system, can I write D dash Q is equal to du plus d dash w? Whenever it is a closed system, I can easily write this equation. लिख सकता हूं या नहीं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। नाउ वो बोला है एडियाबैटिक प्रोसेस, सर ये क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस है सर, not PYQs. I will not do PYQs. PYQs is your headache. Now, what is d dash q? Zero. Why it is zero? Because anyone, because it is adiabatic. It is du plus d dash w. Excellent, sir. So du can be written as minus d dash w. Excellent, sir. Now, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखना। क्या हुआ सर? इफ आई टेक मॉड्यूलस ऑफ बोथ, देखो व्हाट विल हैपन, du is equal to dw. Excellent.
एंड प्रोसेस चल रहा है, ऑलरेडी एडियाबैटिक है, तो हीट ट्रांसफर इज जीरो। ऑलरेडी एडियाबैटिक है, देखो हीट ट्रांसफर इज जीरो एंड डी डैश इज इक्वल टू डी डैश डब्ल्यू, बिकॉज व्हेन द प्रोसेस इज गोइंग ऑन डेफिनेटली देयर विल बी सम इंटरनल एनर्जी। सो कॉन्सेंट्रेशन में कुछ वर्क भी होता है सर, समझ में आ रहा है सर? क्लोजर सिस्टम कॉन्सेंट्रेशन कुछ वर्क भी होता है। सो व्हाट इज द आंसर सर? कौन है रे सर? डेल्टा एक ट्रायंगल, वो ये भगवान, देर आर डिफरेंट नोटेशंस, देर आर डिफरेंट नोटेशंस। आप ना बेसिक्स, वो अलग है ये अलग है सर। एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये है, दैट इज अ बिग डिफरेंस, डेल्टा बिग डिफरेंस। सो आंसर इज व्हाट? इज इट करेक्ट सर? इज द आंसर डी? समझ में आया सर? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है। चलो ये ले लो, आई टेक दिस। प्लीज आंसर करो फटाफट, प्लीज आंसर करो। A closed system undergoing a cycle consists of two reversible isothermal। तो यहां पे कुछ थ्योरी दे दूंगा सर, लुक एट हियर, आई गिव यू सम थ्योरी। d dash q is equal to du plus d dash w, you apply this for closed system, and under what conditions you are applying this equation? When kinetic potential energy changes are neglected, एक है, and closed system एक है। okay sir, no problem, no problem। if the process, and one more thing, अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है सर, जहां पे थ्योरी चाहिए मैं दे रहा हूं। आइडियल गैस है, जूल्स लॉ इसको बोलते हैं, वी कॉल इट एज जूल्स लॉ। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। So if ideal gas is undergoing isothermal process, what will happen to the temperature constant? When temperature is constant, internal energy is constant. When internal energy is constant, the change in internal energy is zero. When the change in internal energy is zero, heat transfer is equal to what? Work transfer. He may be asking in which process the heat transfer is converted into work transfer. It is isothermal process. So you may be wondering, sir, how can complete heat be converted into work? Yes, it is possible because it is a process. Because it is a process. I'm not talking for a cycle. For a cycle, it is not possible. For a process, it is possible. One more thing. और एक बात देखना, सुनिए सर, सुनिए, ये हो गया सर। सवाल ये भी आ सकता सर, लाइकवाइज वन क्वेश्चन कैन कम, इन विच प्रोसेस फॉर अ गिवन हीट, फॉर अ गिवन हीट मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। ध्यान से सुनो सर, किस प्रोसेस में, इन विच प्रोसेस फॉर अ गिवन हीट, फॉर अ गिवन हीट maximum work is obtained? Again it is isothermal process. What is the reason for that? Because in देखो, the word is given heat, मतलब एक particular heat के लिए in which process maximum work is obtained? Because in isothermal process all the heat is converted into work. But unlike other process, if it is a constant volume process, work is zero, but all the heat is stored as internal energy. In constant pressure process, some is stored as internal energy, some is given as work. So, pura work, all the heat, if you want to convert into work in a process, so isothermal will give me that too, if it is an ideal gas. Is it clear, sir? क्या ये बात सबको समझ में आया सर? सो गिवन हीट के लिए आइसोथर्मल विल प्रोड्यूस मैक्सिमम वर्क। क्लियर? यस, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये वाला ले लो। हाँ, टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल, टू रिवर्सिबल, देखो देर आर टू, दिस इज वन आइसोथर्मल, this is a reversible adiabatic, isothermal reversible adiabatic. So in a cycle, when all processes are reversible, this cycle comprises of 4 processes and 4 are reversible. So when each and every process is reversible, the complete cycle is reversible. अगर कंप्लीट साइकिल रिवर्सिबल होता है तो व्हाट इज द इक्वेशन? माय क्लॉसियस इनइक्वालिटी सेज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ d dash q by t is less than or equal to 0. The cyclic integral of d dash q by t is less than or equal to 0. तो लेस देन कब है, ग्रेट इक्वल कब है सर? आप बताइए, लेस देन कब है बताओ? लेस देन इज व्हेन द साइकिल इज इरिवर्सिबल, करेक्ट है नहीं सर? Is it clear? Less than is when the cycle is irreversible, irreversible, irreversible. Okay. So, and equality means reversible. Already this cycle is reversible because two isothermal reversible. तो ये isothermal है. तो क्या होगा सर? So the cyclic integral of d dash q by t should be equal to what? 0. तो क्या है आंसर? Is the answer C correct sir? बोलो, बोलो, बोलो। यस सर, यस सर। क्या सर आप उल्टा आ रहे? करो ये, फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो, मेक इट फास्ट।
Let's not waste time. Carnot heat engine operates between two reservoirs, one at 900. First convert in Kelvin. 900 plus 273 कितना आएगा सर? 900 plus 273 1173 Kelvin. ठीक है. And it is rejecting at what temperature, sir? 30. So what is this 30? 273 plus 30 is 303 Kelvin. ठीक है sir. If the energy transfer during one cycle from the engine is 150, this is given as 150. Am I right, sir? If the heat transfer during one cycle of the engine from TH is 150, then the energy rejected to the lower temperature is, बहुत ही simple है sir, बहुत ही simple है sir. अगर it is a Carnot engine, whenever it is Carnot engine, reversible है, तो reversible के लिए क्या लिखेंगे? Q1 by T1 is equal to Q2 by T2. This is my T1, this is my T2. Correct na sir? Q1 150 by T1 is 1173. Don't use calculators. Don't use calculators. Q2 by T2. What is T2? 300. फटाफट आंसर दीजिए सर. कैलकुलेटर यूज मत करना सर, प्लीज. इट्स अ रिक्वेस्ट. डू नॉट यूज कैलकुलेटर. डू नॉट यूज कैलकुलेटर. सो Q2 is equal to 303 into 150 by 1173. So you will get the value of Q2 as, how much is that Q2? कोई भी नहीं दे रहा सर. वेरी सैड सर. बुरा लगता है सर, दिल से बुरा लगता है सर. क्लियर? करेक्ट. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ले लो. Sir, I am not doing PYQs. PYQs is your headache. क्या क्वेश्चन है सर? यू मे बी वंडरिंग, सर इसरो में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या सर? एक बार देखना क्वेश्चन को. I have seen ISRO papers, sir. There are some lengthy paragraph description questions. अब इस CBT होगा ना, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, शायद. हाँ, ये देखो. कंसिडर अ वेटलेस फ्रिक्शन with a 2 kg mass placed on it as shown in the figure. At equilibrium position 1, the cylinder contains air, the piston cross-sectional area is 1, the ambient pressure, देखो, ये दो words are very important. The ambient pressure in the surroundings outside the piston arrangement is 0. मतलब it is exposed to vacuum. Question को पढ़ो sir. The ambient pressure surroundings outside the piston cylinder arrangement is 0. Okay, 0 bar, absolute 0. When the mass above the piston is removed instantaneously, it moves up and hits the stop in position 2. Okay, assuming G, the thermodynamic work done by the system during the process is, what is the work done by the system in the process? So please listen sir. This is massless. देखते हैं सर कितने लोग स्मार्ट हैं. This is massless and the surrounding pressure is 0. मतलब वहां का लोकल प्रेशर 0 बना दिया गया. ये पूरा वैक्यूम मान लो. दिस इज कंप्लीटली केप्ट इन वैक्यूम. दिस इज कंप्लीटली केप्ट इन वैक्यूम. मान लो एक कंप्लीट वैक्यूम में है. तो अब ये बोल रहा है ओरिजिनली इट वाज लाइक दिस. नाउ द 2 kg mass is removed somehow. When the 2 kg mass is removed, what is the work done by the gas? Read the question properly. दोबारा बता रहा हूं सर, दोबारा बता रहा हूं. Weightless piston, point number 1, and
the ambient pressure of the surroundings is 0. What is the work done? कहाँ गया रे वो क्वेश्चन? वाह, पिंको यादव को सलाम. दैट इज द ब्यूटी. देखो कैसा होता है, यही होता है सर कॉन्सेप्ट. वाह, मजा आ गया. Only one student has given the answer. Only one student has given the answer. आप सोचे थे such big questions can come. देखो एक बार, what a question this is. Whenever the system is doing work, always remember that whenever the system is doing work, there has to be some resistance. देखो एक बार, there has to be some resistance. देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाटर बॉटल को लिफ्ट कर रहा हूं. When I am lifting this water bottle, it is offering some resistance. So against the gravity, I am doing the work. So if the weight is much more, then I have to do much more work because the resistance will be much more. Suppose I want to lift this paper, sir. मुझे ये पेपर लिफ्ट करना है सर. देखो ये पेपर, how much work I am doing? Negligible or zero. ध्यान से सुनो सर. When the mass is removed, when the mass 2 kg mass is removed, now this gas, is there any resistance for this gas to overcome? देखो, this is massless, so lifting the mass is zero. This is massless, lifting this is zero, and this is also atmospheric. ये atmospheric, तो ये तो zero pressure है. So when the, at least यहाँ पे atmospheric pressure होता है, to displace atmospheric pressure, gas has to do some work. But यहाँ पे there is no pressure, it is zero pressure. When it is zero pressure, what is the resistance? क्या सवाल है सर? आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अप्रिशिएट नहीं करते सर. You people don't appreciate such questions, sir. मुझे बहुत दुख लगता है सर. You people don't appreciate such questions. आपको हाँ चाहिए ना, हवाबाजी. So देखो, वर्क होने के लिए there has to be some resistance. So what is the resistance here? This is massless and outside atmosphere, देखो ये है, तो the piston is massless and you have removed that. So there is no resistance, it will move violently. Is it okay, sir? Anyone got the answer, sir? Anyone got the answer? बोलो रे एक बार, comment तो करो रे. Useless fellows, एक बार comment तो करो. सवाल है सर, ऐसे ही आएंगे सर. Why the work is zero? Why the work is zero? बोलो सर जी. यस सर बोल रहे. वाह पिंकू, पिंकू यादव, अगर तू मेरे सामने होता तो आई वुड हैव हग्ड यू. वाह, तू ग्रेट है रे पिंकू यादव, तू ग्रेट है. वाह, नो रेजिस्टेंस, क्लियर. वाह रे वाह. तो यहां पे वर्क जीरो हो रहा है. देयर इज नो रेजिस्टेंस टू द वर्क. मतलब फॉर वर्क ट्रांसफर देयर हैज टू बी सम रेजिस्टेंस. ओके, यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है. अच्छा क्वेश्चन था या नहीं? बोलो रे, वॉज दिस अ गुड क्वेश्चन? अरे यार, कोई कमेंट ही नहीं आते आपके. बच्चे हैया नहीं रे, क्या स्टूडेंट्स है, बुरा लगता है. हाँ देखो, देखो एक बार. An ideal Brayton cycle consists of two isentropic, two isobaric processes, where Ts is the diagram. Okay, which of the following correctly represents the क्या बोलते हैं this cycle, actual cycle. देखो, which of the following, और एक भी ऑप्शन था, चलो और भी एक ऑप्शन दे देंगे आपके लिए. Let me give you one option also. ये एक ऑप्शन है सर. हाँ जी सर, ये भी एक ऑप्शन है. दिख रहा है सर? कैन यू सी? इज इट विजिबल? इज इट विजिबल सर? And you know very well, 1 to 2 is reversible adiabatic, but actual processes are irreversible. So adiabatic irreversible, system entropy should always increase. I'm sorry.
तो इन विच प्रोसेस द सिस्टम एंट्रोपी विल नेवर डिक्रीज, किस प्रोसेस में सिस्टम एंट्रोपी कभी घटता नहीं, इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. सो देयरफॉर if it is reversible adiabatic, irreversible adiabatic dotted should move towards increase in entropy. देखो, yes it is correct, this is increase in entropy, increase in entropy, but यहां पे देखो there is a decrease of entropy, there is a decrease of entropy, isentropic reversible decrease, ये तो होगा ही नहीं. So 1 to 2 there is an increase of entropy, correct, correct, correct. And 3 to 4 yes, turbine में expansion हो रहा है. So this is the actual representation. Here the entropy is decreasing, ये wrong है. Here the entropy is decreasing, decreasing, देखो decreasing, decreasing, ये wrong है सर, ये भी entropy decrease है, गलत है. So B is the right option. Is it okay sir? Okay. Next. ये तो हो गया अभी की. हाँ. Read the question. Read the question. Come on, come on. Read this question and answer. फौरन आंसर कीजिए. Come on, come on. A closed system is undergoing reversible process from 1p2 from state 1 to state 2 as shown in the figure. A system is undergoing a reversible process 1p2. This is the reversible process. ठीक है सर. Okay. कहाँ गए रहे हो? हाँ. कहाँ गए रहे हो? Where is that question? हाँ. Then where xy are thermodynamic properties, an irreversible process 2q1 brings the system back to the original state. देखो एक irreversible process है सर. So that irreversible process is 2 to 1. देखो एक irreversible process है सर 2 to 1. This is irreversible. ठीक है सर. Now see the question properly and answer. क्या बोला है सर? Properly. The net change in entropy of the system and surroundings during the above mentioned cycle is. हाँ बोलो सर. बोलो. Answer. So here is the system undergoing cycle, sir. Is the system undergoing cycle, sir? Is the system undergoing cycle, sir? Yes. Whenever the system is undergoing a cycle, system is brought back to the original state. Entropy is a property. Properties are point functions. So when the system is undergoing a cycle, it is the initial and final points are same. When the initial and final points are same, what will be the change in entropy of the system? Let me tell you very clearly. What will be the entropy change of the system, sir? System का entropy change क्या होना चाहिए, sir? अरे यार, system is undergoing cycle, whether it is a reversible cycle or irreversible cycle, the system is brought back to the original state. So from the initial state, it is coming back to the same final state. So initial entropy, final entropy is same because entropy is a point function. It is a property, of course, extensive property. So what will be the change in entropy of the system? Who is coming back to the original state? System is coming back. So system entropy change is 0. System entropy change is 0. So देखो एक बार, what is the entropy change of system and sorry, first system है तो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, तो दोनों में एक हो सकता है. वेरी गुड सर. नाउ एंड सराउंडिंग्स, ध्यान से सुनिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. ये देखो, यू नो वेरी वेल, मेरे प्यारे बच्चों, एंट्रोपी चेंज of universe is equal to entropy change of system plus entropy change of surroundings, and this should be already process irreversible है, this should be greater than or equal to 0. greater than or equal to 0. ठीक है सर, ठीक है, greater than or equal to 0. यहां पे greater ही ले रहा हूं, क्यों? equal is for reversible but the complete system is a cycle is a irreversible cycle. ठीक है सर. what is the entropy change of the system? ये तो 0 है, ये तो 0 है. अगर सिस्टम का 0 है, what will be the entropy change of universe? It should be greater than 0. Greater than 0 means what? Positive. Positive. Is it clear? So system का 0 and surroundings का positive because it is irreversible cycle. Is it okay, sir? कुछ तो बोले रे, कुछ तो बोले रे. हाँ या ना? हे भगवान,
व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, बोल रहे, shall I proceed, shall I proceed, say something, say something. If you say yes, then I'll proceed. If you say yes, then I'll proceed. Yes. Oh God. ये पढ़ो, यहां से दो तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं सर. फ्रॉम, आई एम नॉट सेइंग यू विल गेट दिस, ओके, इसको बाद में ले ले सर. दो तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं सर यहां से, इसमें से. बट एनीवे आई विल टेक इट अ लिटिल लेटर, इसको थोड़ा बाद में ले लेंगे. ये पढ़ो. एनीवे आई विल टेक इट. कोई याद रख लेना सर. समवन प्लीज रिमेंबर, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिए हम, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिए सर? 27th, आई थिंक 27 ना, 27th. Yes, yes, yes. हाँ बोलो. He has given some processes on TS diagram. देखो देखो, वो पूछ रहा है ये कौन सा प्रोसेस होगा सर. What is A dash process? Anyone? It is horizontal, so therefore temperature is constant. Horizontal, so it is isothermal. Excellent, sir. And what about BB dash? BB dash is isentropic. Entropy is constant. BB dash is isentropic. ठीक है सर. एंड व्हाट अबाउट दिस सर? देखो, ये DD डैश है और ये CC डैश है सर. तो किसका स्लोप ज्यादा है सर? बोलो, अब बताइए किसका स्लोप ज्यादा है? ये DD डैश. सो मोर स्लोप मींस कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक. सो DD डैश, पहले CC डैश लिखेंगे सर, पहले CC डैश लिखेंगे. CC डैश less slope is isobaric, constant pressure, and DD dash is isochoric, that is isochoric. Is it correct sir? क्या ये सही है सर? बोलो रे, कुछ तो बोलो. देखो एक बार, आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक, मोर स्लोप, कांस्टेंट वॉल्यूम, लेस स्लोप, कांस्टेंट प्रेशर. और एक बात है सर, he may be asking what is the slope of isochoric process on TS diagram? It is T by CV. What is the slope of isobaric process? T by Cp. And we know that Cp is greater than Cv. This is the slope for constant pressure. This is the slope for constant volume. So Cp is greater than Cv. जब Cp ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगा, स्लोप इसका कम होगा सर. स्लोप, दिस एंगल इज लेस एंड दिस एंगल इज मोर. सो समझ में आ रहा है सर? सो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है सर. स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. तो आई हैव गिवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ थ्योरी हियर. अब बताओ सर. हाँ, A dash. अब बोलो सर, व्हाट इज A dash? A dash इज आइसोथर्मल. A dash इज आइसोथर्मल, तो ये गलत है, ये गॉन. एंड BB dash इज आइसेंट्रोपिक. BB dash इज आइसेंट्रोपिक. BB dash इज आइसेंट्रोपिक. BB dash इज, ये भी गया. ओके, नाउ ये दोनों में. एंड व्हाट इज CC dash? CC dash इज आइसोबारिक. Did CC dash इज आइसोबारिक and isobaric, and DD dash is isochoric. Is it clear? Is it clear? So what is the answer, sir? Answer is C dash. Yes. Is C option correct, sir? Is C option correct? Bolo. Answer is correct. Yes. Let's go to the next one. Bolo. Make it fast. Make it fast. Please read this question and make it fast. Make it fast. ये करो. Consider a Rankine cycle shown in the figure. TS represents the temperature and entropy. The efficiency can be improved by, bolo sir, increasing pressure at the heat when heat is added. So by increasing the boiler pressure, can we increase the efficiency? Give me answer, sir. Yes, sir. Yes, sir. Increasing the the mean temperature of heat addition will increase. So ye is correct. Decreasing pressure when heat is rejected. So when you are decreasing the pressure at which heat is rejected, मतलब when you are decreasing condenser pressure, the expansion will be more. अरे यार, ये टर्बाइन का एक्सपेंशन है. सो अगर आप और एक्सपेंड करेंगे तो यू गेट मोर वर्क. सो कंडेंसर प्रेशर अगर कम कर देंगे तो यू गेट मोर टर्बाइन वर्क, एफिशिएंसी इंक्रीजेस.
Intercooler, nah. Intercooler will never improve the efficiency. And superheating, yes. Superheating से क्या होता है? The superheating से the mean temperature of heat addition improves and efficiency will increase. So ABD is the right answer. Is it okay, sir? Okay? Yes. ये करो, ये करो. Come on, come on, come on, come on. Let's not waste time, sir. Waste time, sir. Which of the following are correct? The entropy change is positive for a reversible adiabatic. Oh my God. For a reversible process, I can write ds is equal to d dash q by t. अगर reversible है, तो entropy change is positive for reversible adiabatic. Already this is for reversible. And if it is adiabatic, heat transfer is zero. ds zero का मतलब entropy is constant. So but it is positive बोल रहा है. ये गलत है सर. ये गलत है, गलत है. The entropy change is positive for a cycle. For a cycle, the entropy change is zero. For a cycle, the entropy change is zero. तो zero होगा सर. ये भी गलत है. The entropy change is positive in a isothermal heat addition process. Is it correct, sir? Is it correct, sir? अब देखो 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 एक सेकंड प्लीज. Let us take isothermal heat addition and isothermal heat rejection. This is the heat rejection. अब बताओ सर. So what is happening in heat supply? Isothermal heat. आपने Carnot cycle में देखा है. You have seen in Carnot cycle. Isothermal heat addition. Entropy is increasing. अरे very simple रे. ds is d dash q by t. Absolute temperature can never be negative. It is always positive. When you are supplying heat, this is positive. So positive by positive will be positive. So entropy change is positive. In which case, isothermal heat supply. Now dx is equal to d dash q by d dash q by t. Temperature is always positive in Kelvin. So when heat is rejected, ये negative होगा. Negative by positive is negative. ds is negative. So for heat rejection isothermal, entropy change is negative. For heat supply, it is positive. So what is the answer, sir? कहाँ है रे मेरे प्यारे बच्चों? The entropy change is positive for a heat isothermal heat rejection. बिल्कुल करेक्ट है. The entropy change is negative for reversible heat rejection. ये भी सही है. Is it okay? प्यारे बंधुओं, आज तो आपका मूड ही नहीं है सर. आज तो आपका मूड ही नहीं है. पढ़ो एक बार. I've seen some very good questions on like psychrometry in your ISRO paper, sir. ISRO paper, sir. ले लो. Come on, come on. पढ़ो question. Please read the question. I said, please read the question. Consider a psychrometric chart. So when I said thermodynamics, it is complete thermodynamics. ठीक है? ATD सब है. चलो चलो आगे बढ़ते हैं सर. हाँ जी, हाँ जी. Come on, come on. Come on. Come on, come on. ये क्वेश्चन ले लो. देखो मैं बताता हूं सर. फ्लो रेट डेटा में मिसिंग है क्या? बहुत बढ़िया सवाल पूछा. देखो एक देखो. ओ हो. ये भी तो सही है. तो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम एयर. क्या पूछा है सर सवाल? एक बार मैं देखता हूं सर. आई थिंक टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ किया होगा. लेट मी सी द ओरिजिनल क्वेश्चन. एक सेकेंड.
हम्म, देखता हूं सर। एक सेकंड, आई विल सी द ओरिजिनल क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ है क्या? कौन सा क्वेश्चन है रे ये? यस, लेट मी चेक। लेट मी चेक सर, लेट मी चेक व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर। कहाँ गया? हे भगवान। हाँ, आई विल शो यू। यस, अभी मिल गया सर। देखो देखो, क्वेश्चन इज, if the flow rate is 1 kg per second, the rate of heat transfer from the air is dash kilowatt. अब सवाल सही है सर। Yes, now the question is correct. Okay, now देखिए, देखो, consider the psychrometric process denoted by straight line from 1 to 2. The specific humidity, dry bulb temperature, and wet bulb temperature at two states are shown in the table. Okay. The latent heat of vaporization is given. If the flow rate is 1 kg per second, the rate of heat transfer from air is okay. देखो प्रोसेस देखो एक बार, कितना मस्त क्वेश्चन है सर, कितना डेटा इज नॉट मिसिंग। अब देखो, दिस इज द प्रोसेस सर। एक्चुअली यू आर थिंकिंग दैट इट इज अ लेंथी क्वेश्चन, नहीं, देखो एक बार कितना सिंपल है सर। प्रोसेस यहां पे यहां हो रहा है, तो आप बताइए व्हाट इज द हीट ट्रांसफर इन साइक्रोमेट्री। ये तो फ्लो प्रोसेस है। व्हाट इज द हीट ट्रांसफर? 1 से लेकर 2 तक हो रहा है सर। कैन आई राइट दिस एज H2 माइनस H1, या फिर H, यहां पे तो हीट रिजेक्शन हो रहा है सर, तो कैन आई राइट दिस एज H2 माइनस H1? बोलो, हीट ट्रांसफर बोल सकता हूं सर? बोले रे, अरे से समथिंग, से समथिंग, बिकॉज दीज आर फ्लो प्रोसेसेस। Yes. Now you know very well, H1 is equal to CPA T1 plus omega 1 into latent heat plus Cp of vapor into T1. ये सही है सर? ये सही है सर। जनरली वी टेक दिस एज 1.88 T1। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखो एक बार इसरो के प्रीवियस पेपर उठा के ले लेना, साइक्रोमेट्रिक पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए सर, और ये कुछ नहीं है सर। ओके, देखो, सिमिलरली इन दिस प्रॉब्लम, मेरे प्यारे दोस्तों, कंपेयर टू दिस लेटेंट हीट, ये क्वांटिटी बहुत कम होता है सर। कंपेयर टू लेटेंट हीट, ये 2440 समथिंग, और ये बहुत कम होता है। अब 30 डिग्री, 13 टू 1.8 हार्डली 40-50 होता है, तो 2540-50, तो ये नेग्लिजिबल होता है, इसको हटा देना सर। बहुत बढ़िया। तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा H1 इज इक्वल टू CPA T1 प्लस ओमेगा 1 LH। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। देखो, नाउ व्हाट इज H2 माइनस H1? देखो, व्हाट इज H2 माइनस H1? H2 minus H1, H2 is CPA T2 plus omega 2 into latent heat minus, समझ में आ रहा है सर? H2 minus H1 is CPA T1 plus omega 2 into LH। ये सही है, सॉरी ये 1 है ना। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। इज इट क्लियर सर? कुछ तो बोलो सर। बता, तो इस क्वेश्चन में जो लेटेंट हिट दिया है उसका क्या, उसका ही यूज कर रहा है ना सर। डू यू नो एटलीस्ट दिस इक्वेशन सर? एटलीस्ट आपको ये इक्वेशन पता है सर? एटलीस्ट डू यू नो दिस इक्वेशन सर?
अरे यार मैं दोबारा बता रहा हूं सर, जो लोगों को पता नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। देखो देखो, द एंथैल्पी इज गिवन बाय CPA T प्लस ओमेगा इंटू लेटेंट हीट प्लस CPV इंटू टी, ये इक्वेशन होता है सर। कंपेयर टू लेटेंट हीट ये बहुत कम होता है, इन क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन, तो CPV दिया नहीं है और वो नेग्लिजिबल होता है, तो इसीलिए मैं इसको काट दे रहा हूं सर। तो एंथैल्पी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, CPA T प्लस ओमेगा इंटू LH। वेरी गुड। तो H1 इज इक्वल टू CPA T1 प्लस ओमेगा 1 लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट तो एक ही दिया है, तो व्हाट इज H2 सर, CPA T2 प्लस ओमेगा 2 इंटू लेटेंट हीट। बहुत बढ़िया सर, और क्या चाहिए। एंड व्हाट इज T1, अब देखो, इफ यू वांट द हीट ट्रांसफर इट इज H2 माइनस H1। व्हाट इज H2, CPA T2 प्लस ओमेगा 2 LH माइनस, ब्रैकेट ओपन करना, ये पूरा माइनस CPA T2 प्लस ओमेगा 2 LH। ठीक है सर जी। तो H2 और द हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, देखो what is T1 and T2, they are same, dry temperature is same, T1 T2 is same dry temperature, CPA T2 CPA T1 कट जाएगा, तो you are left with omega 2 minus omega 1 into latent heat, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। व्हाट इज ओमेगा 2, इधर देखो प्रॉब्लम में दिया सर, ओमेगा 2, ओमेगा 2, ओमेगा 2 कहां गया रे वो, ओमेगा 2 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.015, 0.015। एंड व्हाट इज ओमेगा 1 गिवन सर, ओमेगा 1 दिया है सर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 1 0.02, 0.02 into latent heat। what is latent heat given, what is latent heat, सॉरी ये 2440 सर, यहां पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 2440, दिस इज 2440। अब बताओ सर व्हाट इज द आंसर, अब बताओ सर, अब बताओ सर। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, कितना आ रहा है सर, 12 पॉइंट समथिंग ना, यस, इज इट 12 पॉइंट समथिंग, माइनस मीन्स हीट इज लॉस्ट, हीट इज लॉस्ट, बट दिस इज किलोजूल पर केजी। अगर आपको मास चाहिए, किलोवाट में चाहिए, मल्टीप्लाई दिस विथ व्हाट, मास फ्लो रेट, ऑलरेडी मास फ्लो रेट इज 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 12.2 into 1, that is 12.2 kilowatt, because this is kilojoule per kg and this is 1 is kg per second, kg कट गया, kilojoule per second is kilowatt। is it clear sir, clear or not clear bे, yes or no, yes, ऐसे आएंगे बट रेयरली आएंगे, ये करो देखते हैं सर, व्हाट अ क्वेश्चन दिस इज, करो सर। Clear, very good। See, why I have selected such questions is, when I saw ISRO paper, when I saw ISRO paper, some questions were like this. That's why I'm doing। ठीक है सर, चलो ये करो, टेक दिस क्वेश्चन सर। Come on, come on। A fluid contained in a cylinder receives 150 kilojoule of energy by means of paddle wheel, means paddle wheel work is 150, means what is paddle wheel work, it is on the system। जानते ना सर, ये सिस्टम है, अगर ये पैडल व्हील है तो इट इज नथिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो दिस इज 150 of mechanical energy by means of paddle wheel, together with 50 kilojoule in the form of heat, the system is receiving this much of heat, this much of heat sorry work as a paddle wheel work, and also 50 units of it is receiving, देखो it is receiving means work is on the system
and it is receiving 150 kilojoule of heat. At the same time, the piston moves in such a way that remains at a constant pressure 200 kilonewton per meter square, and the fluid expansion is from 2 to 3. The change in internal energy and enthalpy is, क्या क्वेश्चन है सर? इधर देखो, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन. देयर इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है सर. देयर इज अ पैडल व्हील. ये कितना वर्क दे रहा है सर? आई थिंक इट इज 150 किलो जूल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये भी बोला है सर 150 किलो जूल एंड पैडल व्हील टुगेदर विद 50 किलो जूल एज हीट. देखो देखो, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो रिसीविंग 50 किलो जूल ऑफ हीट, and the piston is moving. What is the pressure, sir? At a constant pressure of 200 kilopascal, the piston is moving from this to this. Some expansion is taking place. What is that expansion? That is 2 to 5. So initial volume is 2 and the final volume is 5. अब पूछ रहा है सर, is it okay, sir? Is it okay, sir? अब what is the change in internal energy? What is the change in enthalpy? कैसे करेंगे सर? Anyone? Come on, do it. Let me do it. देखो एक बार, b dash q is equal to du plus d dash w. यहां पे दो वर्क्स है सर, एक पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का एक, और एक पैडल व्हील वर्क है सर, एक पैडल व्हील वर्क. एक्सलेंट सर. सुनो केयरफुली. So can I calculate the piston displacement work? The piston displacement work is, anyone? At a constant pressure it is moving. तो क्या होगा सर? The pressure is, what is constant pressure work? Pressure into change in volume, that is 5 minus 2. तो ये कितना हो रहा है सर? This is kilonewton per meter square into meter cube. So ये होगा न्यूटन मीटर इज जूल, किलो जूल. तो what is piston displacement work सर? ये पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क, इट इज 600 किलो जूल. एम आई राइट सर? बोलो सर जी. इज इट क्लियर? यस, 600 किलो जूल. तो इज इट अ पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क? The gas is expanding, means gas is raising the piston. So this work is done by the system. So piston displacement is positive. It is 600 because at a constant pressure it is displacing. ये होगा sir. And what is paddle wheel work? It is 150, but it is done on the system. तो ये होगा आपका minus 150 because paddle wheel work. And there is a heat. It is receiving heat of 50. तो put करना sir. 50 is equal to du plus work. What is that work? So there are two works. One is paddle wheel on the system. One is piston moving. So piston moving is 600 and paddle wheel work is minus 150 because it is done. Paddle wheel work is on the system. So what is the value, sir? 50 is equal to du plus ये कितना होगा? 450. So what is the value of du, sir? I think it is minus 400. Am I right, sir? Minus 400. Is it correct? Sir, it is possible provided you work sincerely. Provided it. Is it correct or wrong, sir? Is it correct? Yes, sir. Now he is asking change in enthalpy. How to find change in enthalpy? You know, देखो, H is equal to, आपको समझ में आ रहा है सर? H is equal to U plus PV. ध्यान से सुनो सर. तो DH is equal to change in enthalpy is DU plus D of PV. देखो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल आएंगे तब समझ में आएगा आपको. तो हियर द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो बाहर लीजिए तो डीवी. सो ऑल डीएच ऑलरेडी द इंटरनल एनर्जी चेंज इज minus 400 वी गॉट. प्रेशर इज 200 एंड व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? द वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम 2 to 5. सो देयरफॉर इट इज 5 minus 2. तो कितना होगा सर? minus 400 प्लस ये कितना होगा? 3 plus 2 is 600. So therefore it is 200. So enthalpy change is 200 and internal energy change is minus 400. Internal energy change is minus 400. Internal energy change is minus 400. Enthalpy change is 200. Is it not a good question, sir? Is it not a good question, sir? सर आप लोगों को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पता है सर.
सो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा, व्हाई आई एम गिविंग ऑल दिस इज आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होने के लिए दे रहा हूं सर। ऐसा नहीं कि ओनली पुराने पुराने करते जा रहे तो माइंड ओपन अप नहीं होगा सर। इज इट क्लियर? तो क्या आपको नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं या मतलब वही वो पुराने पुराने ही चल रहे, बोलो। अरे यार, कोई कमेंट भी नहीं कर रहे तो मुझे यहां पे रुकने की कोई मजा नहीं है सर। ये करो, ये करो। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। देर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेटर। An heat engine receives half the heat of half of its heat supply at 1000. There is 1000. And how much heat it is receiving? Half the heat. And another half it is receiving at 500. And let us say the rejection is QR and it is rejecting at 300. And he is asking the maximum efficiency. Karo sir. Maximum efficiency. Fatafat karo sir. And you know very well, whenever the maximum efficiency is asked, the cycle must be reversible. Whenever maximum is asked, the cycle must be reversible. तो आप देखना सर, अगर साइकिल रिवर्सिबल है, what is Clausius inequality saying? Cyclic integral of d dash q by t must be equal to 0 if the cycle is reversible. For this engine, this q by 2 is entering, so plus, and this q by 2 is at 1000. So therefore, it is q by 2, q by t, q by t. चलो ऐसे लिखेंगे सर, q by t. तो ऐसा लिखेंगे q by 2 by 1000 plus q by 2 by 500. देखो, this is entering plus, this is entering q by t, q by t, q by t, q by t plus, and this is leaving. So minus qr by 300, and that should be equal to 0. तो ये क्या होगा सर? I think you can get the relationship between this. एक सेकंड, इसको ऐसे करेंगे, q by 2 into 1 by 500 कॉमन ले लेंगे सर। सर आपको समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी, आर यू फॉलोइंग सर? आ रहा है? यस। तो q by 2 1 by 500 बाहर ले लेंगे, तो यहां पे 1 by 2 आएगा। q by 2 1 by 500, करेक्ट ना सर? 1 by 2 आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू आर बाई 300। ठीक है, सो देयर फोर क्यू बाई 2 इंटू, ये हो गया क्यू बाई 2 इंटू कितना होगा सर? 2 प्लस 1 3 बाई 2, 3 बाई 2, यहां पे 500 भी है सर, सो देर इज 500 and that should be equal to QR by 300. करेक्ट? चलो, तो इसको थोड़ा निकाल देंगे सर, तो इसको थोड़ा निकाल देंगे, विल रिमूव, प्लेस बन जाएगा। हाँ जी सर। नाउ तो Q बाई 2 इंटू, ये कुछ नहीं कर सकते सर, 3 बाई 1000, 3 बाई 1000 इज QR बाई 300। तो व्हाट विल बी QR माय डियर स्टूडेंट्स? ये 20, ये 2 गए, इधर आया 9 बाई 20 क्यू। एम आई राइट सर? ये सही है सर? 9 बाई 20 क्यू, ये सही है सर? यस सर, यस 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 यस, करेक्ट। So now what will be the efficiency, sir? Efficiency is equal to heat supply minus heat rejection by heat supply. How much is the heat supply? This is heat supply, this is heat supply. Q by 2 plus Q by 2 will be Q minus heat rejection is 9Q by 20 by heat supply. What is the supply? This is the heat rejection. Supply is Q by 2 plus Q by 2 is Q. तो ये हो जाएगा आपका 1 minus 9 by 20. तो ये 1 minus 9 by 20. So this will be 20 minus 9 is 11 by 20, and that is equal to 0.55 or 55%. Is it clear? Anyone got the answer? नहीं आ रहा रे, नहीं आ रहा रे, नहीं आ रहा रे, नहीं आ रहा रे, डगा डगा रे, डगा डगा रे। आपको हल्का फुल्का दिए तो चलता है आपका काम। ये करो, ये करो,
देखो सर, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेटा इन किलोजूल फॉर सिस्टम अंडरगोइंग साइकिल फॉर प्रोसेस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू फॉर 2 3, डेल्टा यू फॉर 2 3, इसका पूछा है सर, ये वैल्यू पूछा है सर। कैसे करेंगे सर? हाउ टू कंप्लीट? देखो सर, बहुत सिंपल है। अप्लाई फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस, अप्लाई फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल। देखो, तो कहां पे हम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं सर? देखो, आई थिंक आई थिंक 4 1 को 3 4 को अप्लाई कर सकते हैं। देखो एक बार, P डैश क्यू इज इक्वल टू, प्यारे दोस्तों इधर देखो, एक सेकंड, नो, डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू। व्हाट इज द हीट ट्रांसफर, ये वाला करेंगे 4 1 के लिए। व्हाट इज द हीट इंटरनल एनर्जी चेंज? आई डोंट नो, ये 4 1 का पता नहीं है। प्लस व्हाट इज द हीट ट्रांसफर फॉर 4 1? 4 1 4 1 4 1 का हीट ट्रांसफर, 4 1 का हीट ट्रांसफर 500 शुड बी इक्वल टू वर्क फॉर 4 1, 4 1 का वर्क इट इज 700। Is it correct, sir? I am focusing on 4 1. D dash Q, that is 500, is equal to du, I don't know, plus work, it is 700. What is internal energy change for 4 1, sir? 500 minus this will be minus 200. Minus 200. तो पूरा ही कर दे रहा हूं मैं, पूरा ही कर दे रहा हूं सर। वेरी गुड, वेरी गुड सर। Is it correct? Yes. Now, can I focus on this, sir? Yes. Let me focus on 3 4. अब मैं 3 4 पे फोकस कर रहा हूं सर। आई एम फोकसिंग ऑन 3 4। 3 4, D dash Q heat transfer is 0. D dash Q is equal to du minus 700 प्लस D dash W। नहीं आया, देखो एक बार, 3 4 3 4 3 4, du minus 700, वर्क कुछ भी पता नहीं, वर्क, एंड Q 0 है, तो वर्क इज इक्वल टू 700। चलो आ गया ये, दिस वर्क इज 700। मेरे प्यारे दोस्तों, कैन आई कैलकुलेट सिग्मा डब्ल्यू? सिग्मा डब्ल्यू टोटल वर्क, नेटवर्क, नेटवर्क कैलकुलेट करना। नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क? कितना आ रहा है सर नेटवर्क? 1400, ये तो 1400 आ रहा है, तो 100 बचा है। इज इट माइनस 500 सर? इज इट माइनस 500 सर? इज द नेटवर्क माइनस 500 सर? करेक्ट है, गलत है? बिल्कुल सही है सर। नाउ इन अ साइकिल नेटवर्क इज इक्वल टू नेट हीट। बहुत बढ़िया सर। यहां पे कुछ मिस हो रहा है तो ये भी कर लेंगे सर, काहे टेंशन। देखो देखो, आई थिंक हियर आई कैन फोकस ऑन 1 2। सो व्हाट इज द हीट ट्रांसफर फॉर 1 2? आई डू नॉट नो। Heat transfer 1 to 2. Q is equal to du. Du for 1 2. 1 2 is 600 plus work for 1 2 is minus 600. Let me repeat, sir. Q is equal to du 600 plus dw minus 600. What is the value of Q12? 0. Q12 is 0. बहुत बढ़िया sir. When you are adding all this, it should come out to be minus 500. Sigma Q is equal to sigma W. Therefore, sigma Q should be equal to sigma W. Already sigma W is minus 500. तो ये पूरा ऐड करेंगे तो minus 500 आना चाहिए। ये तो 0 है, ये 500 है, तो it should be how much, sir? When you are adding, ये कितना होना चाहिए सर? अरे बाबा बोलो, it should be minus 1000. Am I right? When you add, you are getting minus. बोलो, बोलो सर, is it clear? Plus 1000 or minus 1000? प्लस और माइनस? हे भगवान, क्या हो रहा है आपको? नाउ वंस इट इज नोन, व्हेन यू आर एडिंग दिस इट शुड बी minus 500, तो ये आ गया। तो नाउ गो टू 2 to 3, go to 2 to 3. What is 2 to 3 sir? 2 to 3, heat transfer is minus 1000, minus 1000, ये 2 to 3 का अप्लाई कर रहा हूं। सो आई डोंट नो दिस इंटरनल एनर्जी फॉर 2 to 3 प्लस वर्क ट्रांसफर इज फॉर 2 to 3 इज minus 1300, तो ये होगा आपका minus 1300। du for 2 to 3 is equal to, ये इधर लाना, 1300 minus this is 300, so answer is 300। anyone got the answer? These are all brushing up of your fundamentals. Got it? समझ में आ रहा है नहीं सर?
सर इसको ऐसे भी यस बिल्कुल कर सकते हैं. व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस इन डिटेल मैनर इज यू शुड नो हाउ टू अप्लाई फर्स्ट ऑफ फॉर अ साइकिल, फर्स्ट ऑफ फॉर अ प्रोसेस. दैट इज द एम सर. वो मेरा एम है सर. ओके ये करो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. कम ऑन वेरी गुड. देखो in a process occurring in a closed system को he is naming it as F. The heat transferred from F, मतलब there is a system F and surroundings E. Surroundings E है. Okay. How much energy the heat is transferred? Heat. कितना ट्रांसफर हुआ कहां से? From F to the surroundings. If the temperature of E is 300, surroundings are at 300 Kelvin. Excellent, sir. And F is system ka temperature. When it is losing heat, definitely its temperature changes. So it is in between 380 to 400 Kelvin. ठीक है, sir. What are the entropy changes for system and surroundings? This is conceptual question, sir. बोलो. प्रोसेस कुछ भी नहीं दिया सर. लगाओ दिमाग करो. डू इट सर. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. दिमाग लगाओ और करो. सी. देखते हैं सर. पिंकू यादव मतलब क्या बोलू सर. पिंकू यादव. देखते हैं सर. देखते हैं पिंकू यादव. सी. आर यू श्योर? बी केयरफुल बी केयरफुल बी केयरफुल. सी और डी. मुझे पता नहीं सर. आप करो कैलकुलेट. सी और डी. Let me tell you. One thing is quite sure. See the difference between system and surroundings. What is the temperature difference? Around देखो 100 देखो 80 से लेकर 100 difference है सर temperature. So when the temperature difference is so large, can the process be reversible? मेरे क्वेश्चन का आंसर दो सर. द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज सो लार्ज, कैन द प्रोसेस बी रिवर्सिबल? पहला सवाल यह है. रिवर्सिबल होने के लिए इट शुड बी वेरी स्लो. अरे यार नो वन इज कमेंटिंग. ये तो पक्का इरिवर्सिबल है सर. ये तो पक्का इरिवर्सिबल है सर. बहुत बढ़िया. सो फॉर इरिवर्सिबल, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स, दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स. This should be for any process, entropy change of universe should be greater than or equal to 0. Equality is for reversible, greater is for irreversible. But already the difference is so large, it has to be irreversible. It has to be irreversible. So therefore, this should be universe entropy change should be greater than 0. Wait. You know very well, my surroundings are acting like a reservoir. So even though my surroundings are absorbing heat, are you finding any change in the surrounding temperature? No. तो क्या करेंगे? For a reservoir, the entropy change is Q by T. So Q is 300, T is Q is 600, T is, because when heat is absorbed by surroundings, its temperature is not changing. इसका temperature change नहीं हो रहा है. So therefore, entropy change of surroundings is equal to, will it be plus or minus? My surroundings are absorbing heat, surroundings के लिए, for surroundings as they are absorbing, surroundings के लिए plus होगा. Very good. By T, what is the temperature of surroundings? 300. So now देखो reservoir के लिए I can write Q by T. Therefore entropy change of surroundings is 2. जो भी यूनिट है, दिस इज जूल एंड दिस इज केल्विन. सो मेनी जूल पर केल्विन. एक्सलेंट सर. जूल पर केल्विन. तो सराउंडिंग्स आर नथिंग बट ई बोला है. सो इट इज 2 जूल पर केल्विन विच इज प्लस. सो सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज इज 2 प्लस एंट्रोपी, आई एम सॉरी, ये वाला द सिस्टम, दिस सिस्टम आई डू नॉट नो, बट सिस्टम इज गिवन एज व्हाट? F. System is given as F.
plus surroundings are given as E. What is the entropy change of surroundings? Surroundings, matlab E, 2. This should be greater than 0. So entropy change of F should be greater than minus 2. What is the answer, sir? What is the answer, sir? सर आप बोल रहे हैं लेस देन -2. एक बार देखना, सिस्टम का दो आया. व्हाट इज लेस देन -2? -3 is less than -2. What is less than -2? -3. Is -3 less than -2? नेगेटिव में कितना ज्यादा वैल्यू है वो कम होगा. So you someone said C option. चलो entropy of F is less than -2. I'll take -3. Yes, -3 is less than -2. तो ऐड करके देखना. System is 3, surroundings is -3. Is it greater than 0, sir? Is it greater than 0? No, -1. गलत है सर. या क्या मस्त क्वेश्चन है सर. बोलो सर, आपको ऐसे नहीं चाहिए सर. वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी सैड. बुरा लग रहा है रे. अब नहीं आएंगे अब यूट्यूब पे, बंद कर लेंगे अब. ये आंसर दीजिए. कितने ऐसा नहीं कि मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं सर. नो, इन सिंगल क्वेश्चन आई एम डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस. व्हाट इज द आंसर? You know, my dear, cyclic integral of any property is 0. Why? So when you are moving on a cycle, the initial and final points are same. When initial and final points are same, properties are same. When properties are same, the change will be 0. So volume is a property, cyclic integral is 0. Correct hai ye. So pressure is a property, cyclic integral is 0. Temperature is a property, it is 0. Bilkul sahi hai. Oh my God. Is the cyclic integral of heat 0, sir? Heat is not a property. Heat is not a property. तो ये गलत statement है. मतलब which one of the following is incorrect? This is correct statement. This is correct statement. Correct statement. ये incorrect statement है. So option is incorrect पूछा है तो option D है. अगर इसके हाँ, क्या क्या हो रहा है लेखराज? लोकेश, सॉरी लोकेश, क्या हो रहा है? लोकेश, क्या हो रहा है? ये सर विच वन इज इनकरेक्ट. अगर वो करेक्ट बोलता है तो ये तीनों करेक्ट है, ये गलत है. बी केयरफुल सर, फंस जाएंगे. टेक दिस. Kinetic theory of gases assume the collision between molecules perfectly elastic, perfectly elastic, perfectly elastic. Is it okay, sir? Yes, yes. यहां पे हाँ बोलो. And ice and water, they are physically distinct. Ice is solid and water is liquid, physically distinct, a different phase. Therefore, it is heterogeneous system, sir. Heterogeneous system. Heterogeneous system. Heterogeneous system. Is it okay? Okay. बोलो सर, बोलो. या फिजिकली डिस्टिंक्ट है तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड. सो देयरफॉर इट इज heterogeneous, not homogeneous. ये करो. आंसर दीजिए. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास. हे भगवान, हे भगवान. एक सेकंड, एक सेकंड.
लेट अस टेक वो क्या पूछा है सर, एक बार क्वेश्चन को देखो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू द क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर अ गैस रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इधर देखो। Let us supply heat. This is a constant volume process. Let us supply heat. This is a constant pressure process. ठीक है सर। करेक्ट, करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो, now whatever the heat I am supplying, ध्यान से सुनिए, whatever the heat apply I am supplying, it is going as internal energy because piston is not moving, so work done is zero. इसमें work zero है, तो work zero है, all is going to the system, so it is storing as internal energy. So this QV is representing the internal energy. ठीक है। Now here whatever you are supplying, some is gone to the system stored and other is work. देखो, जो आप सप्लाई कर रहे हैं थोड़ा इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो रहा है और थोड़ा वर्क हो रहा है, तो इस QP इज रिप्रेजेंटिंग, सो इट इज इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, सो सम इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, सम इज वर्क। वेरी गुड सर। एंड हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एम CVT at constant volume, and heat transfer at constant pressure is MCPT. वेरी गुड सर। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, ये दोनों का डिफरेंस देखो, सीपी माइनस सीवी। सीपी का मतलब क्या है, देखो कांस्टेंट प्रेशर पे इट इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, एंड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम इट इंक्लूड्स ओनली इंटरनल एनर्जी। अब डिफरेंस करो सर, ये दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा सर, डिफरेंस में ये कट जाएगा, वर्क बचेगा सर। सो द डिफरेंस ऑफ सीपी एंड सीवी विल रिप्रेजेंट द वर्क। समझ में आ रहा है सर? व्हाट इज हैपनिंग सर, आप लोगों को क्या आ रहा है सर? अच्छे क्वेश्चंस है सर ये, क्वेश्चंस है सर ये करो, कम ऑन, कम ऑन डू इट। देखो देखो, the entropy increases of the solid substance as it melts into liquids at 27 degrees centigrade. So the entropy increase of the solid, ठीक है। देखो देखो, you know very well, phase change is internally reversible, तो I can write phase change के लिए क्या लिखेंगे, heat transfer by temperature, entropy change, because phase change is internally reversible, तो reversible के लिए I can write this, and for phase change what is the heat transfer, latent heat, and this temperature should be in Kelvin, so entropy change is given by what is the latent heat, the latent heat is given as 400 kilojoule per kg, 400 kilojoule per kg, and temperature should be in Kelvin, 27 degrees centigrade. 273 plus 27 is 300, so therefore it is 300 Kelvin. तो ये 0 0 कट गया, 4/3 is 1। अब इसके लिए भी कैलकुलेटर चाहिए, तो अफसोस की बात है सर, किलोजूल पर केजी का फर्क पे केल्विन। इज द ऑप्शन डी करेक्ट सर? बोलो रे बाबा, बाबा बोलो, बोलो रे बाबा, बाबा बोलो, बोलो रे बाबा, बाबा बोलो। बाबा लोग, सर आपको टाइम, बिना टाइम वेस्ट करे सारे दे रहे ना, इसीलिए अच्छा नहीं लगता सर। मैं तो बहुत दुखी हूं सर, आप मेरे से खुश नहीं है, तो मैं आज से क्लास लेना बंद कर दूंगा सर। शुड आई स्टॉप? मैं सोच रहा था टू बी ऑनेस्ट, आपको हेल्प करने के लिए इंडस्ट्रियल कुछ प्रोडक्शन पार्ट्स, कुछ मैथमेटिक्स, और कुछ सॉम, देन टॉम, देन मैकेनिक्स, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, क्या बोलते हैं, और क्या, हीट ट्रांसफर, इसके सेशंस करने के लिए सोच रहा था इसरो के लिए, बट यू पीपल आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, तो मेरा मूड तो गया, क्योंकि ना आप सी, आपका भी मोटिवेशन चाहिए सर, आई नीड योर मोटिवेशन ऑल्सो, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा इंसान हूं। तो आज शायद आज लास्ट क्लास होगा यूट्यूब पे। हाँ, चंद्रयान में ले लूंगा और प्लस पे ले लूंगा, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे सर।
करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि आपको क्लास अच्छा नहीं लग रहा ना सर। ये कर रो वो कर रो ये कर रो रे, ये कर रो वो कर रो ये कर रो रे। देखो मैं आपके टाइम को बहुत इज्जत देता हूं सर। अच्छा, यू आर ऑल्सो वॉचिंग शिवम बाबू, कैसा लग रहा है शिवम बाबू? बाबू शिवम, क्लास के बाद प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सर, सेशन एंड होने के बाद अच्छा लगता है तो कमेंट करो, क्योंकि आप लोग नहीं करते सर। देखो, जूल केल्विन एक्सपेंशन, जूल केल्विन एक्सपेंशन, आपने जूल थॉमसन क्वेश्चन देखा है? व्हाट इज जूल थॉमसन क्वेश्चन? देखो सर जी, यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो एक बार, यहां पे प्रेशर है, यहां पे टेम्परेचर है, इसका स्लोप अंडर थ्रॉटलिंग कांस्टेंट एंथैल्पी, तो डो टी बाई डो पी at constant enthalpy, this we call it as Joule Thomson quotient. And ये जो expansion process है ना, we carry out under throttling, means enthalpy constant, we carry out under throttling, and throttling is an irreversible process. So therefore Joule Kelvin process is irreversible process. So और एक क्वेश्चन पूछ सकता सर, for an ideal gas what is Joule Thomson quotient? So Joule Thomson coefficient for an ideal gas, dou T by dou P at constant H. Ideal gas के लिए पूछ सकता सर जीरो. What does it mean? When an ideal gas undergoes throttling process, the temperature change will be zero. इसलिए हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल में यूज नहीं करते सर, क्या बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता है. दैट्स व्हाई आई गो फॉर आइसेंट्रोपिक. इज द क्वेश्चन क्लियर सर? ओके, ग्रेट. ये क्या अजीब दोस्तों. What is Gauss-Todolo theorem? Irreversibility is proportional to entropy generation. What is irreversibility? Exergy loss. Exergy loss is proportional to entropy generation. That is known as Gauss-Todolo theorem. Okay, sir? Okay, sir? Pinku Yadav. Come on. Pinku Yadav. करो, करो रे याद, करो रे याद. देखो, फॉर रियल गैस सीपी इज इक्वल टू सीवी. देखो देखो, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू पीवी बीटा स्क्वायर बाई के टी. It is the absolute temperature, it is the specific volume, and beta is volume expansivity, and kT is isothermal compressibility. Now he is asking Cp is equal to Cv. When Cp is equal to Cv, it means Cp minus Cv must be zero. तो ये टर्म क्या होना चाहिए सर? जीरो. ये कब पॉसिबल है सर? ये कब पॉसिबल है? टेम्परेचर शुड बी जीरो. ये केल्विन में है सर. एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन का मतलब एब्सोल्यूट जीरो. एट एब्सोल्यूट जीरो सीपी इज इक्वल टू सीवी. इज इट ओके? बोलो. कम ऑन, कम ऑन. नहीं, इसके बाद मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा सर आपसे, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, मेरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं और मैं क्या कर सकता हूं आपको. हाँ. इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस रिड्यूसेस बाय 50%. तो फाइनल प्रेशर इज P1/2, 50% घट गया. सीपी आर कांस्टेंट, द स्पेसिफिक वॉल्यूम विल चेंज. वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है पूछ रहा है सर. कैसे करेंगे बोलो?
and you should highlight in a throttling process enthalpy is constant. तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, H1 is U1 plus P1 V1, H2 is U2 plus P2 V2. Absolutely correct, absolutely correct. प्यारे दोस्तों, जब H1 is H2 है, आइडियल गैस के लिए कैन आई राइट एंथैल्पी एज CPT? यस सर, CPT1, H2 is CPT2, तो ये कट गया, तो T1 is equal to T2. Excellent. And you know very well, for an ideal gas, internal energy is a function of temperature. U is equal to CVT. U1 is CVT1. U2 is CVT2. But T1 is equal to T2. जब T1 T2 सेम है तो U1 will be equal to U2. तो U1 U2 बराबर हो गया, तो P1 V1 is equal to P2 V2. बहुत बढ़िया सर. तो P1 V1 is, what is P2 sir? P2 is P1 by 2, P1 by 2, P2 into V2. तो ये कट गया, तो V2 is equal to twice V1. तो इसका मतलब ये हुआ the final volume is twice the initial, so it is increased by a factor, the specific volume will change by 2. Is it okay sir जी? Is it okay sir जी? ओके सर जी. हे भगवान, ये बच्चों को क्या हो रहा है? इज इट ओके सर जी? हाँ जी सर. सर ये इसरो के प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं है सर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं, नए क्वेश्चंस हम करेंगे. हाँ, एयर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली बाय परफॉर्मिंग वर्क डन. क्या बोला रे? एयर. कैन आई ट्रीट एयर एज आइडियल गैस सर? कैन आई ट्रीट एयर एज आइडियल गैस? हाँ जी सर जी. हाँ, एंड ये आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट. हाँ जी सर. Internal energy of an ideal gas is a function of temperature. When temperature is constant, internal energy is constant. ये कौन सा लॉ है सर? Internal energy of an ideal gas is a function of temperature. ये कौन सा लॉ है सर? Which law is this? Very good, very good. So u is a function of d. So what is the value of du sir? When u is constant, du is 0. D dash q is equal to du plus d dash w. And already d is 0 isothermal. So heat transfer should be equal to work transfer. क्या बोला रे? The work transfer is equal to 16. The change in अरे मैं क्या कर रहा हूं सर? So internal energy change पूछा है तो शून्य है सर. So in the same question, suppose a similar question is asked, what is the heat transfer? So what will be your answer sir? मान लो यही क्वेश्चन आया, हीट ट्रांसफर क्या है, तो क्या करेंगे आप? जितना वर्क ट्रांसफर है उतना हीट ट्रांसफर है. इफ द सेम क्वेश्चन कम्स एंड आस्क व्हाट इज हीट ट्रांसफर, इट शुड बी 16. इज इट ओके? बहुत बढ़िया रे. बहुत बढ़िया रे. बहुत बढ़िया रे. एनीवन? What is hyperbolic process? xy is equal to constant is hyperbolic process. xy is equal to constant is hyperbolic process. मतलब xy मतलब pv is equal to constant is hyperbolic process. So rectangular hyperbolic. So what should be the value of n? n का वैल्यू क्या होना चाहिए सर? pv power n is equal to constant. n का वैल्यू क्या होना चाहिए सर? n should be equal to 1. Is it correct? बोलो गोलू.
दिस आई कैन डिराइव, बट अब डेरिवेशंस करते समय तो बहुत टाइम लगता है सर। ये इफ पॉसिबल याद रख लेना सर। द वैंडरवाल्स कांस्टेंट इज आई थिंक sorry, the compressibility factor Z for van der Waals gas at critical point. Critical point पे the compressibility factor for van der Waals gas is 3/8. 3/8 ना, मुझे याद नहीं है रे, 3/8 आ रहा है, 3/8, यस, 0.375। ये याद रख लेना सर, ये आएगा, याद रख लेना सर प्लीज। ओके चलो, आई कैन डिराइव, उसका कोई टेंशन नहीं है। बोल रे बाबा, बाबा बोलो, बोल रे बाबा, बाबा बोलो। थोड़ा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना सर प्लीज। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.01 degree centigrade. If I wish to convert in Kelvin, add 273. So 273.15 plus 0.01. So it will be 273.16 Kelvin. 273.16 Kelvin. ठीक है. And what is the pressure, sir? I think it is 0.611 kilopascal. ठीक है सर, और it can be written as 611 kilo, sorry, 611 pascal. This properties you have to remember. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, you have to remember this. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे। Come on, देखो, which one of the following sets of changes will result in maximum improvement in efficiency? Maximum improvement in efficiency. Efficiency is higher temperature minus lower temperature by higher temperature. So source is higher, sink is lower. ठीक है सर, बोलो सर। मेरे प्यारे बच्चों, इफ देखो, एफिशिएंसी इज 1 माइनस टी लोअर बाई टी है। देखो विच कॉम्बिनेशन, देखो देखो, ओनली T1 को बढ़ा रहा है, यस एफिशिएंसी विल इंक्रीज। जब T1 को बढ़ा रहा है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, दिस वैल्यू विल इंक्रीज। तो नेगेटिव वैल्यू, सॉरी, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू घटेगा, T1 प्लस डेल्टा टी। सो दिस व्हेन दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग, न्यू वैल्यू विल बी T1 प्लस डेल्टा टी। ये वैल्यू बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये टोटल वैल्यू घटेगा, नेगेटिव घटेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। अनदर, इफ आई रिड्यूस T2, अगर T2 को घटा रहा हूं, इफ आई रिड्यूस T2, this value will decrease, negative decrease, efficiency increasing. So efficiency can be increased by either reducing the lower temperature or increasing the higher temperature. But he says which combination इसमें दिया है, this will improve efficiency, this will improve efficiency, this will improve efficiency। ये थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि हाइयर टेम्परेचर घट रहा है, तो हाइयर टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, तो ये पहले निकाल देना। अब ये तीनों में बेस्ट कौन सा देगा सर? ये भी, ये सोना है और ये सोने पे सुहागा, ये दोनों विल गिव मी द बेस्ट रिजल्ट। नहीं आ रहा आपको समझ में? अगर ऐसा कुछ है तो मैं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा सर? इज इट क्लियर सर? अरे ये भी डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू विल डिक्रीज, ये बढ़ रहा है और घटेगा तो नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है का मतलब ये और बढ़ेगा। विच वन विल गिव यू मैक्सिमम इंप्रूवमेंट? दिस विल गिव मी द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट। अच्छा क्वेश्चन है सर ये। इज इट ओके? डॉक्टर लेखराज, सिर्फ लेखराज के कमेंट्स आ रहे हैं सर। ये करो, करो रे दोस्तों, करो रे दोस्तों। मजा 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 मजा।
A cyclic heat engine receives 600 kilojoule of heat from 1000 and rejects 450 to a sink. Okay. Then the cyclic integral of, okay, एक second. Engine लिखो. साइक्लिक इंटीग्रल देखो, देखो तो क्या होगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डैश क्यू बाई टी, तो क्या होगा सर, ये अंदर आ रहा है, तो ये अंदर आ रहा है क्यू बाई टी, दैट इज 600/1000 प्लस, और ये बाहर जा रहा है -450. एट व्हाट टेम्परेचर इट इज गोइंग आउट, लेट मी रिपीट सर. सो इस टेम्परेचर पे अंदर आ रहा है 600/1000 प्लस, ये बाहर जा रहा है -450. ओके, तो ये दो गया, तो 6/10 माइनस ये 2, ये 3, 3/2, तो कितना होगा सर, ये 5 माइनस ये 5, 2 10, 5 3 15/10. करेक्ट है ना सर, करेक्ट है गलत है सर, 5 को से मल्टीप्लाई करना 10 होगा, 6 माइनस 15 इज -9, -0.9. करेक्ट सर, -0.9 आ गया सर आंसर, आ गया सर आंसर, आ गया. तो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, please, shall I apply T1 minus T2 by T1, efficiency as T1 minus T2 by T1. आप बताओ सर, shall I apply efficiency is T1 minus T2 by T1, मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं? Why the answer is no, why the answer is no? अरे यार, that is applicable only when the cycle is reversible. But how do you know that this cycle is irreversible? आप तो देखे सर, वी कैलकुलेटेड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डैश क्यू बाई टी, तो इस साइकिल के लिए आई गॉट -0.9, -0.9 मींस लेस देन 0. व्हेनेवर द साइक्लिक इंटीग्रल इज लेस देन 0 मींस दिस साइकिल इज इरिवर्सिबल. अगर इरिवर्सिबल है, आई कैन नॉट अप्लाई T1 minus T2 by T1. बोले पर आई कैन नॉट अप्लाई T1 minus T2 by T1 इफ इट इज इरिवर्सिबल. अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, गो फॉर हीट्स. ओके, सो व्हाट इज द एफिशिएंसी, सप्लाई माइनस रिजेक्शन बाई सप्लाई, तो क्या होगा ये, फिर 150/600, तो ये फिर 1/4, 1/4 इज 0.25 विच इज 25% इज द राइट. अरे ऑलरेडी आ चुका है ना, बोलो गोलू, बोलो सर जी, बहुत बढ़िया हो गया सर. हाँ, देखो ये कुछ दिया सर, लेट मी राइट. वो पूछ रहा है dz इज इक्वल टू 4xy प्लस 4y², 4xy प्लस 4y², 2x² प्लस 8xy, 2x² प्लस 8xy डिवाइड. इज इट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बोलो. इज इट अ प्रॉपर्टी, वो पूछा है ये प्रॉपर्टी है या नहीं, बोलो ये प्रॉपर्टी है या नहीं, बोलो. नाउ यू टेल मी, इज इट अ प्रॉपर्टी और नॉट, इज इट अ प्रॉपर्टी और नॉट, बोलो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. इज इट अ प्रॉपर्टी और नॉट, ये पूछा है सर.
Come on. किसी को ये आंसर है? Yes, I think dz is equal to m dx plus n dy. M is equal to 4xy plus 4y square and n is equal to 2x square plus 8xy. So it will be exact when dou m by dou y at constant x is equal to dou n by dou x at constant y. Okay, करो dou m by dou y क्या होगा सर? y treating x as constant, ये partial है तो it will be 4x, that's it ना, plus 8y. Y square is 2y, but already 4 is there, 8y. Now dou n by dou x. What is dou n by dou x? 4x, correct, plus 8xy. तो क्या होगा? You are differentiating with x. x तो x का 1 है तो 8y. So yes, this 4x plus 8y, this 4x, therefore it is exact. Is it okay, sir ji? Yes sir जी, yes sir जी. It's whenever it is an exact differential, it is a property. वो बोल रहा है z property है या नहीं है, z property है या नहीं, पूरा बोला है सर, z property है या नहीं. Is it okay? Z is a property. Take this. उल्टा आ गए देखो हम. पहला क्वेश्चन. बोले रे बाबा. Come on, come on. ये actually don't expect such a big question, sir. इसमें different parts है. Any one question can be asked. But ये अच्छा सवाल है. देखो. As shown in the figure, one side of rigid insulated container holds 2 meter cube of air at 27 degree. देखो कहां गया रे वो चंद्रयान हाँ 2 meter cube of air 27 degree 0.3 megapascal. 27 degree and 0.3 megapascal. Okay, the air is separated by thin film evacuated, and this side is 3 meter cube. This side, ठीक है sir. Or owing to the pressure of air, the membrane stretches and eventually bursts, allowing the air to escape full the volume. Ideal gas. Assume ideal gas. Ideal gas. Which of the following is correct? Mass of air, the final temperature, the final pressure. The one thing I can tell, क्या ये process reversible हो सकता है सर? Don't think that these questions come. इसमें से कोई एक आएगा सर. Anyone. Actually, we are not doing single question. इसमें we are doing 4 questions, sir. Even though I have done some 30 odd questions, it means actually we have done so many questions in the given time. देखो, actually what is happening? There is a thin membrane, एक wire है. So as this pressure is more, so this is just stretching this like this, and eventually it is bursting and thereby it is expanding. This side it is completely evacuated. This side it is complete vacuum. So what is the process, sir? What is the process? It is a free expansion process. There is no resistance. So this side, when the gas is expanding, there is no resistance. When there is no resistance, what is the work, sir? Work is zero. Good, sir. Good. And is it a reversible or irreversible? You know, as the difference in pressure is so large, that process occurs so fast, you will not get any time to locate each and every point. तो इतना fast है, तो reversible process is always a slow process. So therefore, it is highly irreversible. तो option, it is a reversible process is galat. This is wrong. This statement is wrong. Final pressure, final temperature, mass of air. Now देखो, can I find out mass of air? This mass of air, yes sir. PV is equal to MRT. Which fluid is this, sir? Air. Is it air? Air. Yes, 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 yes. Air, 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 air. So, what is the mass, sir? PV by RT. इधर अप्लाई करना. Keep this whenever R is in kilojoule per kg Kelvin.
P should be in kilopascal. P, 0.3 megapascal, convert in kilopascal, multiply with 10 power 3. So therefore it will be 300 kilopascal, and the volume is 2. By for air R is 0.287. And what is the temperature? It should be in Kelvin. It should be 300. 27 degrees 300. ये कट गया. तो can I calculate this value, sir? 2 by 0.287. कितना आ रहा है, sir? No calculators, please. I think you can solve this. You will get the mass. You will get the mass. Can you do it? Can you do it? Without calculator, एक बार बताओ. एक बार बताओ विदाउट कैलकुलेटर. मैं बताता हूं सर. Is it correct? 300, 6 3 is 18. 6 लग रहा है मुझे. 6 7 42, 4 48, 52. Is this correct, sir? 6 7 42, 4 6 8 48. 17 आ रहा है. Correct. 6.96. Someone said 6.96. Yes. You have not used calculator, na? Please, you have not used calculator, na? Don't use calculator. अच्छा, ऑप्शन देख के बताया क्या आप? The final temperature is 300. Is it correct, sir? Is it correct? देखो, d dash q is equal to du plus d dash w. So, in free expansion, what is the work? What is the work? In free expansion, it is expanding against nothing. यहाँ पे कुछ है ही नहीं है. When it is expanding against nothing, zero है, तो work is zero. And it is insulated. Zero is du plus work zero. So du is zero. What does du zero? Final internal energy minus initial internal energy is zero. So final internal energy is equal to initial internal energy. So can I write this as mCVT final should be equal to mCVT initial, because internal energy is this. So internal energy of an ideal gas is the function of temperature. When internal energy is same, the temperature will also remain same. If the initial temperature is 300 Kelvin, 27 degrees centigrade is 300 Kelvin, the final temperature will also be 300 Kelvin. Yes, final pressure. How to calculate the final pressure? Can anyone help me? The final pressure. Akhil, please don't say it is isothermal process. No, initial and final temperatures are same. That doesn't mean that throughout the process the temperature is same. No, no, no. How to calculate the final pressure? देखो एक बार. PV is equal to MRT और PV by T is okay, okay. इधर देखना. Okay, आ गया सर. क्वेश्चन आ गया सर. मेरे प्यारे दोस्तों, is the mass changing? It's a closed system. If it is a closed system, is the same mass is expanding, same mass is expanding, same mass is expanding, तो mass is same. R तो constant है. Already you have seen T1, T2 are same. जब T1, T2 same है, ये पूरा same है sir. So therefore, P1 V1 is equal to P2 V2. Correct or not, sir? Mass is constant, R is constant. Here T1, T2 is same. ये पूरे same है. चलो नहीं आ रहा सर. कोई बात नहीं सर. I'll do it sir. Don't worry. I'll do it sir. देखो एक बार. Now you tell me, what is this mass and this mass? The same gas is now expanding, occupying the entire volume. If this is 6.96, this is also 6.96. Very good, sir. And already we have seen this initial temperature and final temperatures are same. Ti is equal to Tf. So therefore, now mass is same. दोनों को डिवाइड कर लेना. Okay, mass is same. R तो gas तो same है and temperature is also same. So therefore, P V1 by P2 V2 is equal to 1. So P1 V1 is equal to P2 V2. What is the initial pressures? Initial pressure is given 0.3 megapascal. So 0.3 megapascal. If this is in megapascal, this will also be in megapascal. Initially, the gas is occupying how much volume, sir? 2 meter cube. It is 2 meter cube. P2 and V2. What is V2? What is V2?
फाइनली देखो पूरा एक्सपेंड होगा 2 + 3, ये 2 और 3 टोटल एक्सपेंशन होके 5 होगा सर, टोटल एक्सपेंशन होके 5 होगा. सो देयरफॉर P2 विल बी इक्वल टू 0.6/3 इंटू दिस 0.6/5. तो कितना आ रहा है सर? 0.12. एम आई राइट सर? मेगा पास्कल. 0.12 मेगा पास्कल. कहा है रे? यस. और 0.12 मेगा पास्कल कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 120 किलो पास्कल. बिल्कुल सही है सर. वो कुछ कैलकुलेशन करके किया, हम तो डायरेक्ट कर दिया आराम से अराउंड 120. बिल्कुल ये भी सही है सर. अच्छा क्वेश्चन था या नहीं सर? से समथिंग. सो वी हैव कंप्लीटेड कितने क्वेश्चंस एक बार देखो. ओ माय गुडनेस, कितने छोटे समय में. एंड वी हैव कंप्लीटेड सो मेनी क्वेश्चंस सर इन द स्मॉल टाइम, इन द स्मॉल गिवन टाइम. वी हैव कंप्लीटेड, एक बार देखना 33 क्वेश्चंस. 33 क्वेश्चंस. मस्त चला नहीं चला सर? 27 कर दो. चलो कर देंगे सर. चलो आप बोलेंगे तो कर ही देंगे सर. व्हेन यू सेड 27 आई विल डू इट सर. पहले इसको देखो ना एक बार. फर्स्ट यू सी दिस. बहुत अच्छा है सर. मुझे अच्छा लगा. नाउ आई फेल्ट हैप्पी कि यू आर एटलीस्ट आस्किंग. माई माई सिंपल सजेशन इज you may not expect such a big question. It's not a big question to be honest. तो इसमें से कुछ टुकड़े टुकड़े आएंगे सर, मतलब पीसेस पीसेस. ओके चलो रीड द क्वेश्चन. डू इट. कैन नॉट से सर. वॉट एवर आई हैव डन ना, यही लेवल रहेगा सर. प्लीज आप हल्का प्रिपेयर मत करना सर. प्लीज प्लीज यू शुड नॉट प्रिपेयर इन अ लाइट मैनर सर. प्लीज हल्का प्रिपेयर मत करना सर. मैं अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस आई विल ब्रिंग कम विथ मोर सेशंस. तो ये बात है सर. एंड क्या हुआ? हम्म, देखो देखो एक सेकंड ना. तो क्या है देखो आई टेल यू. एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस. कैन आई राइट फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू 5/3? बिल्कुल सर लिखेंगे. is contained inside a cylinder piston arrangement connected by a spring. ठीक है सर. As shown in the figure, the piston is frictionless and massless. Oh ho ho. Okay. The spring constant is 10 kilonewton per meter. At the initial equilibrium state, the spring is unstretched. The gas expands reversibly by adding 362.5 joule of heat. Matlab, there is a heat supply. When there is a heat supply, the gas is expanding. When the gas is expanding, the spring is compressed. How much heat is supplied? 362.5. And the spring constant is given as 10 kilonewton per meter. At the final equilibrium state, the piston presses against the stoppers, neglecting the heat loss to the surroundings. The final equilibrium temperature of the gas is, and for monoatomic gas, Cv is given as 3R/2. Actually, R is given as 8.314. Actually, it should be molar specific heat. Molar specific heat. Okay. मैं बताता हूं सर व्हाट इज दिस क्वेश्चन. एक बार देखो. देयर इज नथिंग इन दिस सर. हियर वी हैव अ गैस एंड द गैस इज एक्सपेंडिंग. क्या क्वेश्चन है सर? तो ही इज सप्लाइंग हाउ मच हीट सर? 362.5. एक बार यूनिट देखना. जूल. ठीक है सर. ओ हो डिस्चार्ज हो रहा है. हाँ, इतना हीट सप्लाई कर रहा. नाउ कैन आई राइट d dash q is equal to du plus d dash w? Yes sir. Yes sir. Now I have a question to you people sir. Heat transfer is given. Suppose I find the internal energy change.
Internal energy change for an ideal gas is mcvdt. So I can easily find the final temperature because the initial temperature is already given. So if you can find this du, the problem is solved. But already heat transfer is given. This is 362.5. The only unknown is work. Can anyone tell how to find out work? Be careful, sir. Work is nothing but resistance. क्या क्या वर्क हो रहा है देखो, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सर, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 bar कैन बी रिटन एज 100 किलो पास्कल. तो यू हैव टू डिस्प्लेस दिस एटमॉस्फेयर, दैट इज वन वर्क. नेक्स्ट वर्क इज व्हाट सर? नेक्स्ट वर्क इज व्हाट? आपको अगर डाउट आ रहा है तो वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल. एंड स्प्रिंग इज ऑल्सो कंप्रेस. पहले स्प्रिंग वर्क बताओ सर. स्प्रिंग वर्क इज इक्वल टू half k x square. So the spring work is given by half. देखो when the gas is expanding it is compressing the spring, तो spring work हो रहा है, तो half k. What is k sir? What is k? K is given to us. It is where is that? 10 kilonewton per meter. Kilo means 10 power 3 Newton per meter. ठीक है सर. half k, half k. Half k is 10 kilo means 10 per Newton x square. How much distance it is moving? 5 cm. देखो वो बोल रहा है कि after heating it is coming and stopping here. So therefore 5 centimeters move हो रहा है. 5 centimeter means 5 by 100 meter. But इसका whole square. So meter square. So I converted. So meter is gone. Newton meter is joule. Please give me what is the spring work, sir. No, don't use calculators. Don't use calculators. Do not use calculators. नहीं जरूरत है सर. Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong. 12.5 is correct. यस, वर्टिकल है तो पिस्टन का मास भी आएगा, बट इस केस में केवल एटमॉस्फेरिक डिस्प्लेस करने का वर्क और स्प्रिंग वर्क ही है सर. 12.5 इज करेक्ट. इज दैट द ओनली वर्क डन बाय द गैस? क्या सिर्फ गैस वही काम कर रहा है सर? नहीं ना. तो देयर इज, देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूं. इधर देखो सर, देखो देखो एक बार स्टॉप्स है यहां पे. दिस इज 5 सेंटीमीटर. देखो यहां का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कितना प्रेशर है? कितना प्रेशर है सर एटमॉस्फेरिक? 100 किलो पास्कल. सो व्हाट इज द फोर्स सर? व्हाट इज द फोर्स? P into area. P into area. What is the area? 100 centimeter square. So I can also write, are you displacing this atmospheric pressure at atmospheric air at constant pressure? Yes. तो what is constant pressure वर्क? P into delta V. नहीं आ रहा है समझ में? चलो मैं दूसरी तरीके से बताता हूं. प्रेशर एटमॉस्फेरिक into A. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. तो नाउ यू आर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक डिस्प्लेस हो रहा है. तो कैन आई राइट वर्क इन डिस्प्लेसिंग एटमॉस्फेरिक एयर? वर्क इन डिस्प्लेसिंग एटमॉस्फेरिक एयर. पिस्टन का वेट तो ऐसा है, तो पिस्टन इज नॉट ऑफरिंग एनी रेजिस्टेंस. तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक वर्क? व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक वर्क? वर्क इन डिस्प्लेसिंग एटमॉस्फेयर एयर. इट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स F. माय गैस शुड डू दैट मच वर्क, दिस मच. तो P नॉट A इज द फोर्स into how much distance it is moving, x. So what is area into length? The area of the piston into this length. Area of the piston into length. Okay, कोई बात नहीं. तो atmospheric work is given by, आ रहा है नहीं आ रहा है सर आपको? Are you getting or not? This atmospheric pressure is P naught into area. So that force is exerted, but I should apply that much force in displacing. So how much work it is doing? Whatever the resistance it is offering, how much resistance it is offering? P naught into A. P naught into A. So I should apply that much into this distance, that is x. हो गया सर. What is P naught? Atmospheric pressure 100. But that is in kilopascal. Convert in pascal. So this is Newton per meter square. ठीक है सर. Area. What is the area sir? 100 centimeter square. 100. सेंटी का मतलब 10 power minus 2, but centimeter square is 10 power minus 4 into area into x. What is x sir? कितना distance more? 5 centimeter means by 100. So can you give me this work? Again this is area is meter square and this is meter. ये meter square, तो Newton meter is joule. What is atmospheric work sir? Excellent sir. 50 joule. 50 joule. आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है सर? द एटमॉस्फेयर इज, देखो ये है एटमॉस्फेयर इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस, तो माय गैस शुड डू दैट मच
वर्क इन ओवरकमिंग, तो कितना अप्लाई करेंगे, जितना अप्लाई करें उतना अप्लाई करके इसको डिस्प्लेस करना है. व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P naught into area is force, and that force it should be displaced by how much x. So work is what, for pa into force into displacement. So यहाँ पे देखो एक बार, P naught a into x, very good sir, but what is ax sir? So initially it is occupying this much volume, and finally it is occupying this much volume, and this volume is nothing but change in volume. So area into x, this is x displacement, area into x is change in volume. Constant pressure work is always P naught into delta V. किसको displace कर रहा है, atmospheric pressure into change in volume. What is change in volume? Area into this length, so that will be delta V. Area into length is delta V into atmospheric pressure. हो गया sir. So exactly, I taught very clearly, for irreversible or reversible constant pressure work is P into delta V. I have derived in class. But reversible will give me more work, irreversible will give me less work. Please understand, whether it is reversible or irreversible, constant pressure work will be P into delta V. It doesn't matter whether it is reversible or irreversible. But reversible will give me more work, irreversible will give me less work, even though the equation is same. बट एंड स्टेट्स विल नॉट बी सेम, देयरफॉर इरिवर्सिबल में क्या होता है, थोड़ा लॉस होके वो पी डेल्टा भी रहेगा, लेकिन आपको वो कम वैल्यू मिलेगा, ये ज्यादा मिलेगा. आई हैव डिराइव्ड इन क्लास आल्सो सर. राहुल कितना अच्छा डिराइव किया था. अब अप्लाई करेंगे सर. नाउ लेट मी अब यूज दिस इक्वेशन. देखो, नाउ हैव यू अंडरस्टूड द लॉजिक सर? हैव यू अंडरस्टूड द लॉजिक सर? बोलिए बोलिए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इधर देखना सर. सो देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, d dash q is equal to du plus d dash w. Very good, sir. What is d dash q, sir? He has given 362.5 du. There are two works. One is spring work and one is atmospheric work. So this is 62.5 and this, तो ये होगा du is equal to 300. So ये होगा sir. Unit क्या है sir? du is 300 joule. Very good. अब यहां से हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं सर. देखो, लेट मी डू दिस सर. यहीं पे कर लेंगे सर. du is 300. Is it correct sir? 300 joule. एक सेकंड, we'll complete this sir and stop. du is 300. बट यहां पे एक प्रॉब्लम है सर. वेट. हो चार्जिंग हो गया. हाँ, du is mcv dt. अगर मैं इसको मोलार फॉर्म में लिखता हूं, m अगर है तो n होगा, cv अगर है तो cv बार आएगा सर. वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट आल्सो, कोई बात नहीं सर. वेट सर. ऑलरेडी du is 300 यहां पे लिख लेंगे. डोंट थिंक दैट इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे, नहीं, इससे एक छोटा सा आएगा सर. यहां पे PV is equal, can I write this as du is equal to n, what is CV? R by gamma minus 1 लिख सकता हूं सर. CV is equal to R by gamma minus 1. CV bar is, ये लिख सकता हूं सर. सर ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं, अब मैं बताता हूं सर. अब मैं बताता हूं, इधर देखो, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ये सब पता नहीं, तो PV is equal to NR bar T. करेक्ट है सर. व्हाट इज NR bar सर? व्हाट इज NR bar? PV by T. तो यहां पे पुट करना सर NR bar. P, what is the initial pressure sir? Anyone in the class, what is the initial pressure? देखो एक बार, outside initially the spring is unstretched, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए सर. एटमॉस्फेयर इज एक्सर्टिंग 1 बार, तो ये प्रेशर क्या होना चाहिए सर, बताइए. एनीवन इन द क्लास, इट इज इन इक्विलिब्रियम. अगर इक्विलिब्रियम है, देखो इसका वेट तो नीचे है, तो इधर गैस प्रेशर आएगा, एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम. इनिशियली इट इज इन इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनेमिक्स इज ऑलवेज एप्लीकेबल बिटवीन इक्विलिब्रियम स्टेट्स. इनिशियली इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट. तो अगर ये इनिशियल यहां का एटमॉस्फेरिक 1 बार है, तो अंदर क्या होना चाहिए, बोथ शुड बी सेम, बिकॉज इनिशियली इट इज अनस्ट्रेचड. तो स्प्रिंग इज नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स, तो इनिशियली इट इज अनस्ट्रेचड. So therefore, whatever this force is there, this will be same. So can I say the initial pressure of the gas is same as atmospheric pressure? Yes, sir. How much is that? 1 bar. 1 bar means 10 power 5. क्योंकि you should be careful here. क्योंकि already U is in internal changes in joule. अगर जूल में चाहिए तो सारे जूल में रख देना. तो 1 bar is 10 power 5.
What is the volume, sir? What is the volume? It is 2 liter. Liter मतलब 10 power minus 3 meter cube. And what is the temperature, sir? 300. अब हो गया सर. n r bar इधर पुट करो. Gamma is known. You can easily calculate delta t. आ रहा है नहीं आ रहा सर? Is it okay, sir? सर अब क्या है? 300 is equal to, इधर देखो. Now from here on can you do? So your du is 300 जूल है. तो P is, तो कट जाएगा सर ये. आई थिंक ये कितना आ रहा है सर? हाउ मच इज दिस, एक बार बताओ. 10 क्यूब. ये 2/3 आ रहा है क्या सर? ये 2/3 आ रहा है सर? 2/3 आ रहा है. करेक्ट करेक्ट. समवेयर वी हैव कमिटेड मिस्टेक, आई थिंक. समवेयर वी हैव कमिटेड मिस्टेक. एक बार देखते हैं सर. एक बार यूनिट चेक करता हूं सर. P इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मास इज वॉल्यूम इज मीटर क्यूब बाई केल्विन. तो न्यूटन, जूल पर केल्विन आ रहा है. ये जूल पर केल्विन आ रहा है. तो एन आर बार पीवी इज एन आर बार टी. जूल पर केल्विन आ रहा है, केल्विन. तो जूल जूल टैली हो रहा है. करेक्ट करेक्ट. तो यहां पे पुट करो. आई थिंक यू कैन गेट द वैल्यू. करेंगे आप? कैन यू डू इट? कैलकुलेशन बचा है सर. सीवी दिया है सर. हाँ. अच्छा सीवी दिया है, बट एन इज नॉट नोन ना. तो इससे यहां से किया ना. अरे अरे यार, फ्रॉम हियर. अरे यार एक सेकंड, कर ही देंगे सर. अब छोड़ते नहीं, कर ही देंगे. इधर देखो, इधर देखो. du इज इक्वल टू एम सीवी डी टी. लेकिन मोलार में दिया. du कैन बी रिटन एज एन सीवी बार डी टी. ठीक है सर. तो कैन आई राइट इन द मोलार फॉर्म? नहीं यार, आपको देखो देखो मैं बताता हूं सर. डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी. आई डू इट. नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मॉलिक्यूलर मास. तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास. ठीक है सर. सो du इज इक्वल टू मास होगा n कैपिटल M cv एंड dt. बहुत बढ़िया. तो du इज इक्वल टू n कैपिटल M. cv कैन बी रिटन एज cv कैन बी रिटन एज r by gamma minus 1 dt. So therefore du can be written as, अब देखो, r is r bar by molecular weight. So what will be r into m? Therefore n. What is r into देखो m into capital R bar by gamma minus 1 dt. यही तो बोल रहा था मैं. du ये करेंगे. तो यहां पे देखो n r bar is not known, but you know that pv is equal to n r bar t. So therefore n r bar will be equal to pv by t. Correct or not sir? यहां पुट कर लेना. So internal energy change will be equal to n r bar. What is n bar? pv by t. pv by t 1 by gamma minus 1 into dt sir. अब होगा. Is it okay? 600 is the right answer. बहुत बढ़िया. 600 is the right answer. यहीं से आ रहा है ना ये. वेरी गुड. 300 is equal to P is 10. ये PV by T कितना आ रहा था सर? PV by T कितना आ रहा था सर? आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एज 2/3 ना. यस 2/3. दिस इज 2/3. दिस इज 2/3 into 1 by gamma is 5/3 minus 1 into dt. बिल्कुल सही है. सो 300 इज इक्वल टू 2/3 इंटू, ये 3 ऊपर जाएगा, 5 minus 3 is 2. करेक्ट है ना सर? हाँ 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 हाँ. इंटू dt. तो dt कितना आ रहा है सर? 300. द चेंज इन टेम्परेचर इज 300. व्हाट इज ही आस्किंग सर? द चेंज इन टेम्परेचर इज 300. द फाइनल टेम्परेचर पूछा है. देखो, change in temperature is 300. The final minus initial is 300 is 300 and the final temperature is equal to 600. Is it clear sir? अभी क्लैरिटी आ गया सर आपको? अच्छा क्वेश्चन था सर. मतलब इतना बड़ा तो नहीं आएगा, आप पूछे इसलिए मैं बोला. इज द क्वेश्चन क्लियर? मैनिपुलेशन सीखना सर. अच्छा लगा? इज इट ओके? सो आई एम स्टॉपिंग सर. सेशन अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा सर. अच्छा नहीं लगा तो मैं स्टॉप करूंगा. सो आप अपने कमेंट के फॉर्म में लिखना सर. यू राइट इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स. अच्छा लगा? सी इफ यू, आपको ठीक लगा तो
आफ्टर द क्लास कमेंट्स लीव करना। आफ्टर द क्लास, आफ्टर एंड होने के बाद, सेशन एंड होने के बाद थोड़ी देर के बाद अवेलेबल होता है, तो तुरंत सभी इच्छा रिक्वेस्ट कमेंट शेयर करना। बहुत सही हुआ सर, आपके कॉन्सेप्ट्स ओपन अप हो जाएंगे सर। इसरो बार्क थोड़े अच्छे लेवल के हैं सर, देयरफॉर आई एम एक्सपेक्टिंग गुड क्वेश्चंस। ओके, जबरदस्त, थैंक यू। तो शुड आई कंटिन्यू अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंडस्ट्रियल, टॉम, फ्लूइड, सॉम, देन तो मेरा रिक्वेस्ट एक ही है सर, तो अभी आपको स्ट्रीमलाइन फॉर्म में चाहिए। इफ यू वांट इन ए स्ट्रीमलाइन फॉर्म, तो वी आर स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम टुमारो। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट इज 4th June। क्या? तो आई टेल यू सर, अभी आते रहता हूं ना, आई टेल यू। ओके, चलो फिर। हाँ, क्या करना है सर, बहुत करना है। तो अभी आप ओल्ड क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर लेना, मैं नए क्वेश्चंस दूंगा सर। विद दीज न्यू क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स ओपन अप हो जाएंगे सर। ओल्ड पीवीक्यूज, उसके सॉल्यूशंस बहुत सारे सोर्सेस से दे आर अवेलेबल, तो वो मैं करने से कोई फायदा नहीं लगता सर। ऐसे क्वेश्चंस करने से एटलीस्ट आपके, सही बोला गलत बोला सर, आप बताओ। Okay, right. So the details of this batch is available. So 4th June कल से स्टार्ट हो रहा है सर। ओके, चलो फिर अभी मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। ओके, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट के फॉर्म में डोंट फॉरगेट टू लीव द कमेंट। ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लाइक और शेयर, ये नहीं बोल रहा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट लिखो, बुरा लगा तो बोल दो कि अच्छा नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं सर। ओके, थैंक यू। मैथ्स, अच्छा इसरो में मैथ्स भी आता है? चलो ठीक है, चलो आई एम स्टॉपिंग सर, आई एम स्टॉपिंग। ओके, बाय बाय।